Assalamu alaikum, welcome back to our channel. Today I will teach you New Oxford Modern English chapter number 2 Black Beauty. Black Beauty means स्याह खूबसूरती. Before I was 2 years old, मेरी उम्र 2 साल होने से पहले a circumstance happened which I have never forgotten. एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैं कभी भुला नहीं पाया. It was early in the spring. There had been a little frost in the night. बहार के दिन थे. रात में थोड़ा बहुत कोहरा पड़ा हुआ था. And a little moist still hang over the woods and meadows. और अब भी दरख्तों और चरागाहों पर एक हल्की सी धुंध ठहरी हुई थी. I and the other goat were feeding at the lower part of the field. और दूसरे बछड़े खेत के ज़ेरी हिस्से में चढ़ रहे थे. When we heard quiet in the distance, जब हमने खासी दूर से ऐसी आवाज़ सुनी. What sounded like the cry of dogs, जो कुत्तों की चीख सी मालूम होती थी. The oldest of the goat raised his head, pricked up his ear and said, बछड़ों में से सबसे ज़्यादा उम्र वाले ने सर उठाया, कान खड़े किए और कहा, There are the hounds. रहे शिकारी कुत्ते. And immediately entered off. और फौरन ही हम सबको पीछे लगाए. Followed by the rest of us to the upper part of the field. खेत के ऊपरी हिस्से की तरफ भाग पड़ा. We could look over the edge and see several fields beyond. जहाँ से हम झाड़ियों की बाड़ के ऊपर से कई खेतों से परे देख सकते थे. My mother and an old riding house of our master's were also standing near and seemed to know what all about it. मेरी माँ और हमारे मालक का एक बूढ़ा सवारी का घोड़ा भी नज़दीक ही खड़े थे और लगता था कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं. They have found a hare. उन्हें एक बड़ा खरगोश मिल गया है. Said my mother. मेरी माँ ने कहा. And if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार देख लेंगे. Soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to our. और जल्द ही सब कुत्ते हमारे खेत के बगल वाले नोखेज खेत की तरफ तेज़ी से भागते गुजरने लगे. I never heard such a noise as they made. मैंने कभी ऐसा शोर ना सुना ऐसा इन्होंने पैदा किया. They did not bark, nor howl, nor whine. वो भौंके नहीं, ना ही होंके और ना ही कूं की. But kept on a yo, at the top of their voices. बल्कि पूरी कुव्वत से यो वो चिल्लाते रहे. After them come a number of men on horseback. इनके पीछे घोड़े पर सवार कई आदमी आए. Some of them in green coat, जिनमें से चंद ने सब्ज़ कोट पहन रखे थे. All galloping as fast as they could. सब पूरी रफ्तार से घोड़े भगा रहे थे. The old horses snorted and looked angrily after them. वह घोड़ों ने फिर खड़े मारे और इश्तियाक भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे. And we young goat want to be galloping with them. हम कमसन बछड़े इनके साथ सरपट भागना चाहते थे. But they were soon away into the field lower down. मगर वो जल्द ही नीचे की तरफ के खेतों में पहुंच गए. Here it seemed as if they had come to the stand. यहाँ ऐसा लगा जैसे वो खड़े हो गए हों. Dogs left off barking.
کتوں نے بھونکنا بند کر دیا and ran about every way it their noses to the ground. اور زمین سے ناکیں لگائے چاروں طرف بھاگنے لگے. They have lost the scent. وہ حواس کھو بیٹھے ہیں. Said the old horse. بوڑھے گھوڑے نے کہا. Perhaps the hare will get off. شاید خرگوش بچ نکلے. What hare? I said. کون سا خرگوش؟ میں نے کہا. Oh, I do not know what hare. اوہ میں نہیں جانتا کون سا خرگوش. Likely enough, it may be one of our ones here out of the wood. زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ ہمارے ہی جنگل کے خرگوشوں میں سے ایک ہوگا. They can find will do for the dogs and men to run after. کوئی بھی خرگوش مل جائے آدمیوں اور کتوں کے پیچھا کرنے کے لیے کافی ہوگا. And before long the dog اور جلد ہی کتوں نے اپنی begun their yo-o-o again. yo-o-o دوبارہ شروع کر دی. And back they come all together at full speed. And back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and edge overhang the brook. اور وہ سب پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے واپس سیدھے ہماری چراگاہ کی طرف آئے، اس حصے کی طرف جہاں بلند کنارہ اور جھاڑیوں کی بارنیاں کے اوپر لٹک رہے تھے. Now we shall see the hare, said my mother, and just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the woods. اور اسی وقت خوف سے پاگل ہوئی ایک خرگوشنی تیزی سے گزری اور درختوں کی طرف بھاگی. On come the dogs, they burst over the bank, leaped the stream, and came dashing across the field, followed by the huntsman. کتے آئے، تیزی سے کنارے پر سے گزرے، ندی پر، اور شکاریوں کے پیچھے لیے بھاگتے ہوئے کھیت میں سے گزر گئے. 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dog. 6 یا 8 آدمی کتوں کے عین پیچھے اپنے گھوڑوں کو صاف چھلانگ لگوا کر لے گئے. The hare tried to get through the fence. It was too thick and she turned sharp round to make for the road. It was too late. خرگوشنی نے بار میں سے گزرنے کی کوشش کی. یہ بہت زیادہ گھنی تھی اور وہ سڑک کی طرف جانے کے لیے مڑ گئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی. The dogs were upon her with their wild caries. We heard a shriek and that was the end of her. کتے وحشیانہ چیخیں بلند کرتے اس پر ٹوٹ پڑے. ہم نے ایک چیخ سنی اور اس کا انجام تھا. One of the huntsmen rode up and whisked off the dog, who would soon have torn her to pieces. شکاریوں میں سے ایک گھوڑا بھاگا کر پہنچا اور کوڑے مار کر کتوں کو ہٹا دیا. He held up the rabbit and all the gentlemen seemed well pleased. اور جلد ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اس نے خرگوشنی کو بلند کیا اور حضرات بہت خوش ہوئے. As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. جہاں تک میرا سوال ہے میں اتنا حیران تھا کہ پہلے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ندیہ کے پاس کیا ہو رہا ہے. But when I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down. One was struggling in the stream and the other was groaning on the grass.
मगर जब मैंने देखा एक उदास कुन मंजर सामने आया। 2 उम्दा घोड़े गिरे पड़े थे। इनमें से एक नदी में टांगे चला रहा था और दूसरा घास पर पड़ा कर रहा था। One of the riders was getting out of the water covered with mud and the other lay quite still. सवारों में से एक कचरे से लथपथ पानी से निकल रहा था और दूसरा बिल्कुल साकत पड़ा था। His neck is broken, said my mother. इसकी गर्दन टूट चुकी है, मेरी अम्मी ने कहा। And serves him right too, said one of the court. और इसे दुरुस्त सजा मिली, बच्चों में से एक ने कहा। I thought the same, but my mother did not join with us. मेरा भी यही ख्याल था, मगर मेरी माँ हम में शामिल नहीं हुई। Well, no, she said. नहीं, उन्होंने कहा। Must not say that. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। Though I am an old horse and have seen and heard a great deal. बच्चा, मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा। And heard a great deal और सुना है। Never yet could make out why men are so fond of this sport. मैं कभी ये समझ नहीं पाई कि मर्द इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं। They often hunt themselves, often spoil good horses and tear up the fields, and all for a hare or a fox or a stage that they could get more easily some other ways. वो अक्सर अपने आप को ज़ख्मी करा लेते हैं, अक्सर अच्छे घोड़ों को बर्बाद कर देते हैं और खेतों को उजाड़ डालते हैं, और सब एक खरगोश के लिए या लूमर के लिए या बारहसिंगे के लिए, जिसे वो किसी तरीके से कहीं ज़्यादा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। But we are only horses and do not know. मगर हम महज घोड़े हैं और इल्म नहीं रखते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।